Namaskar, hello and a very warm welcome to CIET NCERT's live phone-in interactive program. My name is Tanvi Khurana. At this moment you're watching us on eVidya, channel number 6 to channel number 12. Today is the day 4 of this online training going on the theme which is safety and security in digital space. So far we have discussed the types of cyber crimes happening, and we have discussed the psychological aspects and even technical aspects. Today we are going to discuss the legal aspects in cyber safety and security. If you have any questions, any queries, please reach out to us. You can simply call us on our number, which is 8800 440 559. There is a particular email ID where we take up queries on cyber safety and security, and that is cybersafety@ciet.nic.in. We have two guests with us, and they are here, and they'll be more than happy to answer all your doubts regarding this topic. So feel free to share your questions till 5 o'clock, and we have multiple methods through which you can reach to us, and one of that is our YouTube channel. That is NCERT official. In the live chat box, you can write down your questions, your queries, and share them with us. So this is an online training going on. It's a 5-hour online training, and it started on 12th of June, and it will go on till 17th of June. So we have a lot of time, and we are going to discuss a lot of things in between. So far, if you have not registered yourself, if you have not participated in this particular program yet, I would request you to please do that. I'll explain the entire method, how you can do that, and what is the purpose of this entire online training towards the end of this program. So I would request you to please watch it till the end. Let me please introduce to you my guests for today. My first guest is Mr. Rushi Mehta. Sir, a very warm welcome. Thank you, ma'am, for the invite. Sir is a cyber security professional from Indian Cyber Crime Coordination Center from a Ministry of Home Affairs. And we have with us our next guest. He is Mr. Robin Sebastian. Sir, a very warm welcome. Thank you very much. Sir is an Assistant Commandant from, again, Indian Cyber Crime Coordination Center, Ministry of Home Affairs. I welcome both our guests once again in this program, taking out time and talking to our viewers. That's really appreciable. Thank you so much. So we're going to begin this program very, very soon, this discussion very, very soon. But before that, let me just tell you that as a part of Jan Bhagidari events, CIET NCERT is conducting various activities online. And this 5-hour online training is a part of it, which started from 5th of June to 9th of June. It will go on for 4 o'clock till 5 o'clock. Tomorrow would be the last day, and a new topic will be discussed, and the quiz link will also be given to you. So let me tell you that this entire training is to leverage the understanding of teachers, students, teacher educators, administrators, and other stakeholders of school education on safety and security in digital space for teaching, learning, and assessment. And we are extremely proud of the fact that India assumed G20 presidency and would convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country this year, that is 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history, as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say the world is one family. So Vasudhaiva Kutumbakam also translates to one earth, one family, one future, and that is exactly the theme of this year's India's G20 presidency. So let's begin this conversation on the legal aspects of cyber safety and security. I would like to ask my experts, what is it that we are going to understand in this particular program? What are those legal aspects that you think our viewers need to understand? Yeah, thank you, ma'am. Thank you once again to NCERT for giving us such a wonderful chance for us here. Myself, Robin Sebastian, from Indian Cyber Crime Coordination Center. We are just initially going to look out what is this cyber crime. As all of you know, cyber crime is a criminal activities that is done in any means, in computer or any devices, IoT, anything. And you can just see in our childhood, we were just seeing that we have a means of landline connections,
Later we just came to mobile connections. Then now we are just in this digital era. So after this 2000 and we can see that after when the mobiles new entry, there are a lot of cyber crimes happening in our country. We can just go through main cybercrime that reporting in India. Mainly you can just know online financial frauds. What are online financial frauds? You might be knowing about OLX scam or something like OTP scam and KB lottery, loan apps, instant loan apps and YouTube liking. Like these are the many kind of cyber crimes that is reporting normally in India. In financial frauds you can see there will be a message that coming to your mobile saying that your computer is going to stop, sorry, your account is going to be stopped and you have to share this OTP. And initially what you will do, if you are unaware about that, you will just share your OTP and your account will be leave with no balance. And someone in OLX, you can see somebody is telling that, pretending like that I am an army officer and I got transferred to somewhere else and I have to sell all my furniture and you will get it in 50% discount. So what normally people think, yeah, I am getting one big offer and I will just go for that. And initially they will ask for some money and you will give the money and he will just left with your money. Okay. And you can just see cyber stalking and harassment. As a students, you all will be coming across this kind of activities because we all are using social media. So cyber stalking is, what is cyber stalking? That someone is just coming to your WhatsApp group or in Facebook and continuously just giving messages or just sending mails. So that will be called as cyber stalking or harassment. And hacking, what is hacking? That is normally with multinational companies with the financial benefits. They are doing the hacking and taking out the data and they are selling in dark web or some other companies for financial benefits. And malware attacks. So normally you can see they will send a mail to you or a SMS with a phishing link and they will just install a malware in that. Once you just click on the link, then automatically a malware will be installed in your device and it will automatically take out your data. And pornography. Pornography is legal, but child pornography is illegal in India. As you know, POSCO acts and all. Once you are just watching child pornography, you are under the watch of Indian legal system. And cyberbullying. Cyberbullying also just like another term of cyber stalking and harassment. So you will be just, if you have some revenge with one person and I'm just taking his or her Facebook account or Instagram account, I'm just morphing some photos and pasting it, or I am just sending some messages to their friends circle with content of some sexual content or something like that. So that can be called as cyberbullying. And cyber terrorism, that is a big term. That's normally that is mixed with the security of the nation. So that is involving that it will be like central agencies like NIA, CBI will be investigating that matter. So cyber terrorism also a big issue, cybercrime reported in India. So once you are being victim of this cybercrime, so what is the next step that you have to do? Normally people don't know what they have to do. We have seen that we have nearly the police station, we have to approach them and lodge a complaint. So now, that is a normal way. But now we have some other kind of activities that is benefited by the central government. The first one is the helpline number 1930. So from anywhere in India, any person, if they lost money, they can just call to 1930 helpline number without going to any police station. So that will be, I will be just explaining how that will be working. And next is just like we can just sit at your place and in your device, whether it is in mobile or computer, you can lodge complaint in www.cybercrime.gov.
training.helpdesk.gov.in. So that is a cybercrime reporting portal. And next is file a complaint in the nearest cyber police station. So nowadays in every states we have cybercrime police stations, cyber cells. Most of our states have, in every district they have multiple 1 or 2 cybercrime police stations. And you can file a complaint in bank also if your money has been lost in online. So you can from which bank you are using currently, if for instance it is SBI, then you can lodge a complaint in SBI. So that is these are the normal ways now. So I will just come to reporting portal. This NCP, National Cybercrime Reporting Portal, that is the unique idea that has been implemented by the central government. So sitting at your home, you can just lodge a complaint in this portal. Once you enter in www.cybercrime.gov.in, there will be an option like which is the complaint you are going to enter it. Just like if you are women and any kind of complaint related to that, or if you are a child, any complaint related to that, any financial fraud, that also. So separate parts are there. So you can just load your complaint with the initial information, what was the actual thing happened. If you have been, for instance, your Instagram account has been hacked. So you just enter your URL and enter all the details like what has happened, when it is happened, and from what it is happening. Something nude videos have been posting in my Instagram account. So the initial narration. Then it happen like it will be going to the particular police station or state police where you are lodging this complaint. For instance, if you are sitting in Assam and you are lodging this complaint in this portal, and the complaint will be going to Assam police and they will look after this. And next is 1930 helpline number. So this helpline number is especially for financial frauds. If you have lost money for any kind of means like OLS, OTP, like YouTube like recently that also in mainstream, like you will get a message from someone that you have to like the YouTube and you will get some money that will be come to your account. So initially the amount will be coming and people will think, especially students also, they will think that okay fine, I am getting the money, then I will just go for some other scheme, like I will be investing 10,000 and I am liking the videos of some celebrities, I am getting the money. So later only they will be knowing that they are losing the money from their account. So you can call to 1930. So I will just explain you how it will be working. So you are sitting in Delhi and you are just calling to 1930. The call will automatically go to the state where you are sitting. If you are sitting in UP, the call will go to the helpline number, call center of UP police. If you are sitting in Delhi, the call will automatically connect to Delhi police call center. So they will initially ask the questions probing from where you, what is your address, when it happened, from which account it has been deducted, and particular evidence, screenshot and all. So you can just upload that screenshot also. You can just give the particular details also. Then they will be updating that in online. So once you have informed all the details about this particular fraud, and the police will issue a notice to the bank, from the particular bank from which the amount has been deducted. For instance, your account is in SBI and your money has been deducted from that and it has gone somewhere. You don't know about what happened. And the police will issue a notice to State Bank of India, and they will give the prior details from which account it has been deducted, account holder name, and how much money has been deducted, and the particular time period. So that will be going to the particular bank, and the bank will check the transaction. Bank will check the transaction and bank will just tell, okay, the amount has been deducted from this account and it has been gone to some other account, maybe to HDFC Bank or ICICI Bank, some other things. And if the money is there, then SBI will inform the police and they will just freeze that amount there. Or if the money has been gone to some other banks, then they will give the notice to
next bank. If it is to HDFC, then they will issue the notice to HDFC. Then when the notice received in HDFC, that will be containing the particular transaction has been happened in this time, and it will be the transaction ID and amount of the transaction. So they will check the account, and if the money is there, then they will freeze, or they will further that carry on with the procedure. Then they will give the notification to another banks or payment gateway, whatever it is, intermediaries, anything. And once the amount has been withdrawn, then we have to go through the FIR. We go to nearest police station, then FIR, then with the police will do the investigation. So this is the normal parts of once you have lost the money that you have to do. First one is you have to register the complaint in www.cybercrime.gov.in, cybercrime reporting portal. Then next is you have to call to the helpline number, cyber helpline number 1930. So what are the legal framework in India? Initially, in earlier we don't have any kind of cyberspace, and we had postal card, and we had landline system. So we had Indian Telegraph Act in 1885. It was in Britishers' time, and later it came to Indian Penal Code, that was in 1860. So normally it is called IPC. It has 23 chapters and 511 sections. And next it is Indian Evidence Act for all the crimes, how the evidence should be collected, how the evidence should be submitted in the court, how it will be preserved. These all things have been narrated in Indian Evidence Act that was enacted in 1872. So later in 2000, when this IT sector grew up, then we had a Information Technology Act that is prescribing about all the IT related matters. What all things will be come under if stalking is done, hacking is done, or financial laws, what will be doing, and if someone is doing impersonation, that taking one's, for instance, somebody is taking my WhatsApp photo and keeping in some other mobile number and sending message to some of my friends and asking money, pretending that I am the person. So in that case, what will be the act will be? So these all things have been narrated in Information Technology Act 2000. But later in 2008, there is an amendment to this act, Information Technology Act, that also covering many portion. So these are the stakeholders of cyberspace protection in India. You can see many agencies are working on it. NSCS, National Security Council Secretariat, and MHA, this I4C also coming under this Ministry of Home Affairs, MIT, MOD, NTRO, Ministry of Defense and National Technical Research Organization, and law enforcement agencies like State Police and DOT, Department of Telecommunication, and many other agencies are working on this. So we can just see the recent trends in cybercrimes that Sri Rushi will be taking that session. So I'm just handing over to Sri Rushi. Sure, sir. Thank you for that lucid explanation on the cyber crimes. So I will cover in both the languages, English and Hindi. So thoda, we are seeing more viewership, I think, ma'am, on the Hindi part, right? So फाइन, तो थोड़ा हिंदी में भी कवर कर लेंगे एंड ताकि एक अच्छे से समझ में आए कि क्या चल रहा है आज के टाइम पे. और अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को समझा सके कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है. और अगर आप स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं तो फिर आपको हम बताना चाहते हैं कि इतनी चीज़ें जो साइबर वर्ल्ड पे हैं तो उसको आपको ध्यान रखनी है और इतनी चीज़ इसको आप ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं. सो कैन वी गेट द प्रेजेंटेशन अप? यस. सो फर्स्ट वन इज़ जो अभी चल रहा है राइट नाउ इज़ जो सबसे मैक्सिमम कंप्लेंट्स दैट वी आर सीइंग इज़ ऑन द इलीगल मोबाइल एप्लीकेशंस. तो लेट्स से आप बैठे हैं घर पे, आपको मंथ एंड है, आपको पैसे की ज़रूरत है. कई बार बच्चों को भी ऐसा है कि उनको पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगने हैं और कोई पार्टी करने जाना है या किसी को ट्रीट देनी है. तो उस केस में बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है तो उनको लगता है कि मैं ऑनलाइन जाके लोन अप्लाई कर लूँगा. सो दे विल ओपन द गूगल प्ले स्टोर में खोल के
लोन ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपने ये इलीगल ऐप्स डाउनलोड कर लिए तो आपका फोन, आई विल नॉट गो मच टेक्निकल, बट आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा? तो उसमें एक परमिशन का कॉन्सेप्ट होता है। आपने जैसे ही 3-4 बार ओके ओके दबा दिया, जो हम दबा देते हैं, किसी को पता नहीं रहता है कि क्या लिखा हुआ है। सो इन दैट केस आपकी पूरी कॉन्टैक्ट्स उनके पास चली जाएगी, आपकी गैलरी, आपके पर्सनल फोटोज उनके पास चले जाएंगे जिन्होंने ऐप बनाया है। और आफ्टर 7 to 10 डेज अगर आप लोन वापस नहीं देते हैं तो इन दैट केस वो आपका हैरेसमेंट स्टार्ट कर देंगे। और इसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हुए हैं। तो जस्ट इमेजिन करिए कि एक छोटा सा ऐप जिसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी वजह से सुसाइड्स हो रहे हैं। इसमें बच्चे भी हैं, बहुत सारे फीमेल्स भी हैं, क्योंकि ये जो हैरेसमेंट जो होता है वो बोल नहीं पाते। सो कमिंग टू द लीगल पार्ट, इसको हम टर्म कर सकते हैं साइबर हैरेसमेंट। तो अगर आपको ऐसा कोई चीज़ ऑनलाइन हैरेसमेंट आपकी हो रही है तो बिना रुके आप 1930 कॉल करके पुलिस को बोल सकते हैं, या 100 पे भी कॉल कर सकते हैं, या तो नियर बाई साइबर सेल में जाके बात कर सकते हैं। या अगर आपका कोई काउंसलर है स्कूल के अंदर, अभी बिफोर कमिंग हियर हम थोड़ी बात कर रहे थे एक इधर के टीचर से, तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि बच्चे बहुत कंप्लेंट्स लेके आते हैं ऐसी चीज़ों में। सो आप बिना झिझक के उनसे बात करिए एंड देन यू कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड पुलिस फंक्शनरी विल हेल्प यू। तो एक जो ट्रेंड है दैट इज द इलीगल लोन एप्स दैट इज गोइंग ऑन। तो ध्यान से लोन ऐप्स अप्लाई करिए, यूज करिए। ऐसा नहीं कि सब चीजें जो ऑनलाइन होती है वो सही होती है। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड दैट वी आर सीइंग। सेकंड ट्रेंड, वी विल नॉट गो इनटू ऑल द ट्रेंड्स, बट एक ऊपर से आपको जस्ट बता देते हैं कि जितने भी मीडियम हैं इंटरनेट एक्सेस करने के, टेलीकॉम हो गया इंटरनेट के थ्रू, आपका हैकिंग मोबाइल ऐप हो गया, सो अलग अलग जितने भी आपके मोड्स हैं जो आप यूज़ करते हो नॉर्मल लाइफस्टाइल में, जैसे आपने किसी को फ़ोन कर रहे हो, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, आप प्ले स्टोर यूज़ कर रहे हो, आप ऐप स्टोर यूज़ कर रहे हो, आप एटीएम यूज़ कर रहे हो, हर एक जगह पे देयर इज़ रिस्क। तो दो पार्ट होता है, एक होता है डिजिटल इंडिया और दूसरा होता है सिक्योर डिजिटल इंडिया। सो आपको अगर क्राइम से बचना है सो देन यू हैव टू फॉलो सम सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स दैट वी विल डिस्कस, कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और बहुत सारी तरीके से साइबर क्रिमिनल्स बैठे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस, इट इज द फिशिंग। आपको ऐसा वाला मैसेज आएगा कि योर SBI अकाउंट इज टर्मिनेटेड। अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे तो दैट इज अ URL आप देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है, ये कोई रैंडम URL है जो आपको दिख रहा है, और इसमें आपने अगर यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके बच्चों को गेम खेलने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड दे के रखते हैं कि भाई कुछ परचेज करना है, कोई गेम के अंदर एक्स्ट्रा लेवल अप करना है, तो ये लो मेरा यूजर नेम पासवर्ड या UPI एड्रेस, UPI पिन यूज कर लेना, ठीक है। सो वो अगर कर दिया तो भी बहुत सारे केसेस आते हैं, उनको पता नहीं होता है बच्चों को कि इसमें ये चीज़ गलत होती है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू बी केयरफुल। SMS में कुछ लिंक्स आ रही है, क्लिक नहीं करनी है। अगेन लोन ऐप्स का आई वुड रिपीट अगेन, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि ये बहुत कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से रोज़ हज़ारों लोगों का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, विच इज़ वन ऑफ द मेजर रिपोर्टेड कंप्लेंट। नाउ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो भारत सरकार क्या कर रही है उसको बचाने के लिए? सो एटलीस्ट यू शुड नो द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, सो दैट अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो आप बच्चों को हैंड होल्ड कर सके या अपनी फैमिली में हैंड होल्ड कर सके। सो देयर आर मेनी पोर्टल्स दैट आर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग एनी साइबर क्राइम। सो फर्स्ट पोर्टल इज नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। जैसा सर ने बताया, इट इज नॉट जस्ट यूज्ड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट तो आप फाइल कर ही रहे हो, बट कुछ अच्छी चीज़ है जो हमारी रिसर्च टीम बनाती है और इसके ऊपर पोस्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेली डाइजेस्ट। आप जैसे ही साइबर क्राइम पोर्टल खोलेंगे उसमें एक ऑप्शन है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में आप जाके जैसे ही चेक करेंगे तो डेली डाइजेस्ट दिखेगा आपको। डेली डाइजेस्ट क्या है कि रोज जितने अलग अलग टाइप के जो क्राइम होता है उसका एक कंपाइलेशन है। आप उसको पढ़िए, आप उसमें से देख सकते हैं कि ये नया ट्रेंड आ रहा है तो मुझे क्या करना है बचने के लिए। बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ रूल डज नॉट प्रोटेक्ट यू। अगर आपने कुछ चीज़ मिस कर दी तो यू मे बी अ विक्टिम। सो ये पोर्टल आप यूज़ करते हैं डे टू डे बेसिस में, तो आप सेफ गार्ड कर पाएंगे खुद को।
सेकंड, इसमें बहुत सारी मैनुअल्स हैं, अगर आपको सीखना है साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ, तो उसमें आप देख के पढ़ सकते हैं। दिस पर्टिकुलर पोर्टल, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन फॉर एवरीवन। तो ये पहला पोर्टल है जो MHA हैंडल करता है। सेकंड वन इज, अभी बहुत अच्छा एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज संचार साथी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका फोन चोरी हो जाता है या तो कहीं पे गिर जाता है जो आपको पता नहीं है इन केस। सो इन दैट केस एक बहुत अच्छा प्रयास है भारत सरकार का, जिसके अंदर दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ पोर्टल। आप ये पोर्टल के अंदर अपना लॉस्ट और स्टोलन फोन रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड जब भी मिलेगा देयर विल बी अ नोटिफिकेशन टू यू। सो इट इज अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल दैट इज वेरी मच यूजफुल ड्यूरिंग एनी थेफ्ट। अब ध्यान रखिए क्यों साइबर क्राइम में हम इसको थोड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो फोन चोरी हो गया है उसको यूज करके भी क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि फोन का बिल आपके नाम का है, राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू रिपोर्ट इट समवेयर। सो दिस इज अ वेरी नाइस पोर्टल, सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, जहां आप फोन स्टोलन का रिपोर्ट कर सकते हो। इट इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सो दैट इज अ संचार sathi.gov.in. this is for phone. Entire phone is very much important, so kindly keep this in your directory and suggest anyone if they are losing their phone. Next एक है साइबर सेफ पोर्टल। अगर आपको कोई नंबर चेक करना है, कोई आपको अननोन कॉल आ रहा है और आपको चेक करना है कि ये फोन कोई क्रिमिनल का तो नहीं है, ये फ्रॉडस्टर का तो नहीं है, या तो किसी ने आपको कोई अकाउंट नंबर भेज दिया कि ये अकाउंट में मुझे पैसा ट्रांसफर कर दो, और आपको चेक करना है कि क्या ये अकाउंट कहीं पहले तो फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं था, या यूपीआई एड्रेस चेक करना है, तो दिस इज ओपन फॉर पब्लिक। लॉगिन भी नहीं करना है, cybersafe.gov.in पे जाइए एंड उसमें आप फोन नंबर डालिए। अगर ये डेटाबेस में होगा कहीं पे भी, सस्पेक्ट डेटाबेस में, तो आपको उधर के उधर दिख जाएगा कि ये फोन से कोई फ्रॉड हुआ है पास्ट में। सो वी हैव टू बी केयरफुल बिफोर डीलिंग विद इट, ठीक है? दिस इज रन इन कोलैबोरेशन ऑफ MHA एंड द स्टेट पुलिस, सो यू कैन यूज दिस एज वेल फॉर सेफ गार्डिंग। नेक्स्ट इज, लेट्स डिस्कस अबाउट द केस स्टडीज। कि लीगल, वी आर नॉट गोइंग टू मच इनटू लीगल एक्ट्स वगैरह में, बट जो दिन ब दिन जो चीजें होती रहती हैं उसका हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव द फर्स्ट क्राइम के पार्ट्स। अगर आप IT एक्ट देखेंगे, साइबर क्राइम पोर्टल देखेंगे, तो इतने इतने अलग 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 टाइप के क्राइम्स हमें देखने को मिलते हैं। रिसेंटली अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके पैसे गंवा रहे हैं। फेसबुक पे वी हैव सीन लॉट इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस एज वेल, कि पहले रिलेशनशिप में होते हैं और उसके बाद अगर मान लो ब्रेकअप हो गया फॉर एग्जांपल, तो देन द अदर पर्सन विल क्रिएट अ फेक अकाउंट इन द नेम ऑफ द गर्ल एंड स्टार्ट हैरेसिंग। तो वो आएगा फेक और इम्पर्सोनेटिंग प्रोफाइल में। तो ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि कौन कौन से टाइप के क्राइम्स होते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो क्राइम है बट हमें पता ही नहीं है। सो दीज आर दोज थिंग्स, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट कॉमन थिंग दैट एवरीवन डज इट, पायरेसी। आप अगर इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो, लेट्स से कोई सीरीज आई है आपका नेटफ्लिक्स के ऊपर और दूसरे दिन आपको टेलीग्राम में वही चीज डाउनलोड के लिए मिल रही है, मूवीज, तो दैट इज, अगर वो कॉपीराइटेड है तो दैट इज कॉल्ड एज पायरेसी। सो यू आर इन्फ्रिंजिंग द कॉपीराइट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडिया ओनर। दूसरा, सॉन्ग्स हम डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट में, कहीं से नया कोई मूवी आया है उसका, तो दैट इज ऑल्सो इलीगल टू डाउनलोड सॉन्ग, टू डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर, टू डाउनलोड एनी मूवीज। अगर कॉपीराइटेड है, अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, तो देन यू आर डूइंग अ क्राइम, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट केस स्टडी। इट इज लीगली नॉट permitted to download these content and that may result in any legal actions. Second one, hacking. कई लोगों को फन लगता है हैकिंग, सो हैकिंग से क्राइम होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी एक पर्सन को रिसेंटली बेंगलोर पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसने 1.4 करोड़ साइफन ऑफ कर लिए थे हैक करके, इनकम टैक्स रिफंड के नाम से। सो हैकिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी के सिस्टम को अनऑथोराइज एक्सेस कर रहे हैं। तो मूवीज में थोड़ा फैंसी दिखेगा ऐसे कि नहीं चलो सिस्टम में घुस गए, हैक कर लिया एंड देन वो हो गया, बट इन एक्चुअल लाइफ दिस इज अ क्राइम, unauthorized access to some person, so that is why it should be avoided, right, without any permission. थर्ड केस स्टडी देखते हैं कि कई बार आपको लगता होगा कि सज़ा तो बहुत कम है IT एक्ट के हिसाब से, 2 साल 3 साल, बट रिसेंटली एक जजमेंट है, देयर वर सम फ्रॉडस्टर्स जिन्होंने KYC, जो बहुत बेसिक क्राइम होता है कि KYC, सर आप
हम बैंक से बोल रहे हैं आप KYC अपडेट कर दीजिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर रहे थे, बट जब थोड़ा एनालिटिक्स किया तब पता चला उनका पूरे इंडिया में क्राइम में इन्वॉल्वमेंट था। नाउ व्हाट हैपेंड इज, जैसे ही पता चला कि इंडिया में इन्वॉल्वमेंट था तो जज सॉ दैट ग्रेविटी एंड देन ही गेव देम लाइफ टर्म। लाइफ टर्म का मतलब ऐसा होता है कि उनको एंटायर लाइफ के लिए नाउ दे विल बी बिहाइंड द जेल, बिहाइंड द बार्स। सो दिस वाज फॉर अ साइबर क्राइम। तो कन्विक्शन अभी होना अच्छे से स्टार्ट हो गया है एंड पुलिस इज ऑल्सो वेरी फास्ट, वर्किंग वेरी फास्ट। गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड एक्टिंग स्मूथ। सो इसकी वजह से दिस इज अ रीसेंट न्यूज आप देख सकते हैं 4 अप्रैल का, जहां पे साइबर क्राइम के बेसिस पे जब कोई पब्लिक ने कंप्लेंट की, तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कंप्लेंट करिए साइबर क्राइम पोर्टल पे 1930 पे। अगर आप कंप्लेंट टाइम पे कर देंगे तो पुलिस कैन टेक एक्शन। एक्शन आपकी स्क्रीन पे है। पुलिस ने एक्शन लिया, इट वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट ने उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। सो दिस इज हाउ द it is important to file a complaint on the cyber crime portal and go to the cyber cells. Next, punishments. We will not go into the theory part. आप देख सकते हैं जितने अलग अलग टाइप के क्राइम हैं, जैसे डिफेमेशन, फेक न्यूज, आपका हेट्रेड स्प्रेड करना, आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दीज आर मेनी सीरियस क्राइम्स जिसकी वजह से आपको एज पर द लॉ पनिशमेंट मिल सकती है इफ इट्स अ क्रिमिनल। ऑल्सो अगर आपके साथ ये भी चीज हो रही है तो आप ये सब कैटेगरी को साइबर क्राइम पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं एंड देन एक्शन विल बी टेकन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। सो दैट इज व्हाई go to the portal, file a complaint if there is any issue that has happened to you. So अब कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि आई थिंक ऑडियंस भी पूछेंगे कि मान लो पैसे चले गए इन केस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल फ्रॉड। कि फाइनेंशियल फ्रॉड में क्या होता है, आपके अकाउंट से अनऑथोराइज्ड पैसा निकल के किसी और के अकाउंट में चला जा रहा है। सो इन दिस केस अगर आपके अकाउंट से पैसा चला गया तो क्या करें? तो एक तो आपको 1930 में कॉल करना है। सेकेंड, आरबीआई की एक गाइडलाइन है जहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं और आपकी गलती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम में से पैसे निकालने के लिए गए जो आप नॉर्मली जाते रहते हैं और सडनली यू गेट ए मैसेज कि आपके अकाउंट से 50,000 डेबिट हो गए। आपने किसी को पिन नहीं दिया है, आपने किसी को आपका एटीएम का कार्ड नहीं दिया है, आपने किसी को ओटीपी नहीं दिया है, उसके बावजूद आपके अकाउंट से पैसे कट गए। सो इसका मतलब ऐसा होता है कि someone has cloned your debit card. Now as per the RBI guideline, अगर कस्टमर का नेग्लिजेंस नहीं है, मतलब अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आपने किसी को ओटीपी नहीं दिया है, आपने किसी को पासवर्ड नहीं दिया है, आपने कोई लिंक पे क्लिक नहीं किया है, फिर भी पैसा कट गया, तो इट इज ए जीरो लायबिलिटी ऑन द कस्टमर, मतलब बैंक को वो पैसा रिफंड करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेक, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। यू शुड नो योर राइट्स। द लीगल पार्ट इज आरबीआई की गाइडलाइंस। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा होता है या आपके कोई स्टूडेंट्स के साथ हुआ, फैमिली मेंबर्स के साथ हुआ, यू कैन यूज दिस गाइडलाइन एंड देन यू कैन कोट कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने किसी को कुछ नहीं दिया था, फिर भी ये कट गया। So this is the first point that we would like to highlight and have a complaint registered on the same. Second part is, if you can see the screen, जैसे this is a typical ATM मशीन के ऊपर एक क्लोनर लगा दिया है। अब अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अगर कोई पर्सन है जिसको नहीं पता है कि ऐसे क्लोनर डिवाइस भी होता है, एंड इस केस में अगर कोई क्लोनिंग हो गया तो देन यू विल गेट बैक द मनी as per the RBI guidelines on the limited liability of the customers. Second one is, एक नया चीज अभी चल रही है कि आपका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अंगूठे का अगर वो किसी के हाथ में आ जाता है तो भी आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं विदाउट एनी ओटीपी। इस केस में भी देयर आर लायबिलिटी गाइडलाइंस कि क्योंकि आपकी गलती नहीं थी, आपका अंगूठा का जो फिंगरप्रिंट था वो किसी ने क्लोन करके चोरी कर ली, सो इन दैट केस ऑल्सो यू आर नॉट लायबल। सो देयर आर मेनी different cases wherein you can get back your money without even any FIR or investigation. Bank has to refund back the money. तो इसके लिए ये चीजें जानना आपको जरूरी है। So next we will, this is very important slide. भारत में सबको पता है कि साइबर क्राइम का रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अभी। So in that case
हमें क्या चाहिए अभी, हमें चाहिए लोग जो साइबर क्राइम रोक सके, हमें चाहिए साइबर वॉरियर्स, हमें चाहिए साइबर कमांडोज। उसके लिए अगर आप टीचर हैं, अगर आप पेरेंट हैं जो ये शो देख रहे हैं अभी राइट नाउ और आगे भी देखेंगे, काइंडली कंसिडर दिस फील्ड एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी नीड लॉट ऑफ साइबर लॉयर्स राइट नाउ। बिकॉज अगर क्राइम बढ़ेगा तो लॉयर्स चाहिए, लॉयर्स भी स्पेशलाइज लॉयर्स चाहिए जिनको साइबर का नॉलेज है, दे आर टेक्निकल लॉयर्स। सेकेंड वन इज वी नीड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की गाइडलाइंस है कि आपको सीसो जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर रखना है, तो उसके लिए वी नीड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। जहां पे कोई हैकिंग हो रहा है उसको फिक्स करने के लिए इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स लगते हैं, उसको टैकल करने के लिए, तो वी नीड इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स। अगर कोई मेलवेयर आ गया तो उसको स्टडी करने के लिए मेलवेयर रिसर्चर्स चाहिए। अगर आपको 24/7 देखना है आपका थ्रेट्स, कोई आपको कोई हैक तो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट चाहिए आपको। और ये सब नौकरी कहाँ पे होती है, आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होगा, प्राइवेट कंपनीज में होगा, पुलिस में होगा। रिसेंटली मेनी स्टेट पुलिस हैव स्टार्टेड रिक्रूटिंग एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट डोमेन्स। तो बहुत अच्छा फील्ड है। टीचर्स, दोज हु आर टीचिंग द स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली ये सजेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को। राइट, BCA साइबर सिक्योरिटी होता है, BTech साइबर सिक्योरिटी होता है, MSc साइबर सिक्योरिटी होता है, BCA फॉरेंसिक्स होता है, BTech फॉरेंसिक्स होता है। सो इतनी सारी चीजें हैं एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अमेजिंग। सो प्लीज आस्क द स्टूडेंट्स टू टेक दिस अप। और कई स्टूडेंट को ऐसा होता है कि हमें देश सेवा करनी है, हमें आर्मी में जाना है, एंड बट उनका फिजिक ऐसा नहीं होता है कि दे कैन क्वालिफाई दैट राउंड। बट नेक्स्ट जो वॉर होगा दैट इज एक्सपेक्टेड कि साइबर वॉर हो सकता है। सो इन दैट केस यही लोग काम आएंगे जो पूरा साइबर का नॉलेज रखते हैं। दे कैन कम टुगेदर एंड सेफगार्ड द नेशन सिटिंग ऑन देयर कंप्यूटर। आई नो दैट इज that I mean it's unbelievable, but yes, it is happening in the other part of the countries as well. So इसको आप consider कर सकते हैं as a career opportunity, and the teachers can motivate their students. And the last part is, जो आपका अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज कम है ये सेक्टर में, या तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे अप टू डेट रहना है, तो वी हैव अ वेरी गुड टीम एट MHA who is continuously researching on daily basis, टायरलेसली, एंड उसी को लेके कंटेंट बनाया जाता है। अब ये कंटेंट हम ऐसा बनाते हैं कि नॉर्मल लोगों को समझ में आ जाए, जिसमें हम मीम्स यूज़ करते हैं, जिसमें वीडियोस यूज़ करेंगे, जिसमें अलग अलग ग्राफिक्स यूज़ करेंगे। तो जितने भी हमारे साइबर दोस्त के हैंडल हैं, यू कैन जस्ट ओपन योर ट्विटर राइट नाउ। एटलीस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड इज, जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, मैम कितना ऑलमोस्ट 3000 प्लस पीपल हैव जॉइंड राइट नाउ, तो जितने भी 3000 लोग अभी जुड़े हुए हैं राइट नाउ, ओपन अप योर फोन एंड जस्ट टाइप @cyber दोस्त, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज, आप @cyber दोस्त जब सर्च करेंगे आपको ब्लू टिक वेरीफाइड हैंडल मिलेगा। आप उसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड स्टूडेंट से भी करवाइए, टीचर से भी करवाइए, पेरेंट्स से भी करवाइए, सो दैट जो हम कहना चाहते हैं, we know many things we need to tell to you। जैसे बच्चे अभी कई अभी टीचर से एक बात हो रही थी, दे आर सेइंग कि बच्चे इतना फोन यूज कर रहे हैं अभी, और इतना केयरलेसली गेम्स खेल रहे हैं जो कि उनके मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है, जिसमें बहुत सारी चीज वो देख रहे हैं जो उनको नहीं देखनी चाहिए, जिसकी वजह से ऑनलाइन हेरेसमेंट हो रहा है। सो वैसा वाला कंटेंट भी हम इसमें पोस्ट करते हैं। तो बाई चांस अगर आपने आपके स्टूडेंट्स को भी इसको सब्सक्राइब करवाया होगा तो उनको अच्छा कंटेंट भी आएगा, जो वो स्क्रॉल करेंगे उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सो दे विल सी दिस। एंड अगर आपकी बात नहीं मान रहे तो इंटरनेट पे हम बोल रहे तो हमारी बात शायद मान जाए, ठीक है। सो इसके लिए मेक श्योर आप ये चीज लिख लीजिए, हर एक हैंडल हमारा ब्लू टिक है, वेरीफाइड है, इट इज अ वेरीफाइड हैंडल। डेली 3-4 चीजें हम पोस्ट करते हैं, इवन जो क्रैकडाउन होते हैं, कहीं अरेस्ट होती हैं, उसकी भी चीजें हम अभी पोस्ट करना स्टार्ट किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस हैंडल एंड स्टे अपडेटेड। एक ही हैंडल है जो आपको कंटिन्यूसली रोज इंफॉर्मेशन देता रहेगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सो विद दिस वी विल एंड फ्रॉम आवर पार्ट, एंड वी हैव आई थिंक लॉट ऑफ questions, ma'am. A lot of queries. Approximately 3500 are watching this program at the moment, and yes,
Okay, so let me start with the queries first and then I'll read out the compliments for you too. Okay. अभी एक क्वेश्चन आया कि कहते हैं कि जब हम फोन सेल करते हैं तो उसमें अगर आप फैक्ट्री रीसेट भी कर दो तो भी कुछ इमेजेस साइबर में रह जाती हैं, करेक्ट, स्पेस में रह जाती हैं, राइट? Yes. तो क्या हमने जो पासवर्ड्स भी डाले होते हैं, लेट्स से पेटीएम में या गूगल पे पे, वो भी कहीं ना कहीं रह जाते हैं और वो रिकवर होने के चांसेस होते हैं? Yes, see, memory, I will not go much into technical part, but there are softwares which can be used to recover the deleted data. Okay. तो अगर आपने कुछ चीज सेव की है आपके हार्ड डिस्क के अंदर और अगर आपने वो जो हाई एंड सॉफ्टवेयर होते हैं उसको यूज आप कर रहे हो तो यस, डिलीटेड डेटा कैन बी रिकवर्ड, ठीक, टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट. तो बेटर है अगर आप फोन कहीं पे सेल कर रहे हो या आपका लैपटॉप कहीं पे सेल कर रहे हो तो यू फिल योर फोन विथ जंक डेटा, ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि पहले आपको फोन फैक्ट्री रीसेट कर देना है, नंबर 1. राइट. सेकेंड, यू हैव टू फिल योर फोन विथ रैंडम डेटा, मतलब आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल दो अंदर, बहुत सारा आपका इमेजेस डाल दो, कोई भी रैंडम इंटरनेट से लिया हुआ विच इज नॉट अ पर्सनल डेटा. उसके बाद आप फिर से फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज अगर कोई रिकवरी होगी तो रिकवरी कौन सी होगी, आपका जंक डेटा की होगी रेदर देन योर ओरिजिनल डेटा, ठीक है. सो दैट इज अ सेफर वे टू format your phone and then sell it online or give it to somebody. So I think that would be the right way to go forward. That's actually a good suggestion, and Yes. I'm sure our viewers, they're going to keep in mind next time they sell their phone. Another question is by Mrudula. She's asking, you mentioned cloning. जैसे cards का clone हो जाता है, and there was a device which you just showed. So how to check that? Because when you make the transaction through the ATMs, you generally don't notice that. Yes. So how to check that? So thank you for that question, ma'am. So first thing is I would like to tell you कि जो टेक्नोलॉजी है उसको आप यूज़ करिए अच्छे से. जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक अच्छा फीचर लॉन्च किया है, योनो कैश. सो विदाउट ATM कार्ड यू कैन डू एन ATM विड्रॉल, ठीक है. तो नंबर 1 इज यू कैन यूज योनो कैश फीचर दैट इज ऑलरेडी गिवन बाय सम बैंक्स, मतलब कार्ड लेस ATM विड्रॉल, सो दैट कोई इश्यू ही नहीं है कार्ड क्लोनिंग का. सेकेंड वन इज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक योर बिफोर इंसर्टिंग. आप जब कार्ड को प्लग करते हैं उसमें कोई आप चेक कर सकते हैं कहीं छोटा कैमरा तो नहीं है, कहीं ऊपर कोई एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं लगा हुआ है, और जब पिन डाल रहे हैं तो उसके ऊपर एक हाथ ढक दीजिए ताकि इन केस देयर इज अ कैमरा इंस्टॉल द पिन विल नॉट गो. ऑल्सो आफ्टर विड्रॉइंग you can just erase your fingerprint marks from the keyboard of the ATM card, so that will be sufficient for the protection. And जो ATM आप यूज कर रहे हो मेक श्योर कि मतलब इट इज रिकमेंडेड कि कोई ब्रांच में या कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला ATM हो विच इज मोर प्रोटेक्टेड रेदर देन एन अनप्रोटेक्टेड ATM. So yes, with this unprotected ATM, like you mentioned, there was one of the comments where a person said that ये जो cloning होती है ये highways पर या जो deserted ATMs होते हैं उन पर ज़्यादा होती है. Is that true? So I don't have the exact data, but it's like if we are keeping the door open, so it will attract more thieves rather than the door closed, right? So I mean I would answer in that way. Okay, okay. Yeah. Another question is by Mr. Kakaroti. He is asking कि there's an application called Truecaller जिसमें हम अक्सर junk calls show कर देता है. So is it safe to download that application so that we know beforehand get to know कि हमारे पास ये call junk है and we are not supposed to pick it and answer that? So I would not comment on a particular application because I mean they have their own proprietary content. बट एक चीज है कि यू कैन चेक द इंटरनेट एज वेल. इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू सून ब्रिंग आउट समथिंग विथ विच you can see the I mean you can identify whether if someone is calling from a particular fraud number or you can identify the caller. So वो एक already आने वाला है. And with regards to these protection types, it is upon you, it is your own choice whether to install any app. You cannot tag any application because you can see there are crores of installs that people are using. So it is on your decision, it is your phone whether to use it or whether not to use it. Okay. You mentioned that RBI की गाइडलाइंस के अंदर अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है और जो कंप्लेनेंट है उनकी कोई गलती नहीं होती है, Correct.
तो उन्हें वो अमाउंट बैंक को रिकवर करना पड़ेगा. बट द कंप्लेनेंट, हाउ इज ही और शी सपोज टू प्रूव दैट इट्स नॉट हिज फॉल्ट? Okay, so complainant prove कैसे करें? So there is a internal investigation team that is working in the bank. So first part आपको क्या करना है कि अगर आपका कुछ ऐसा unauthorized transaction होता है, so you file a complaint on 1930 cybercrime portal and then immediately to your branch as well. Now the bank will take up the matter internally and they will conduct an investigation. Second, there is also a thing called as ombudsman. If you are not satisfied with the bank, then you can contest on the RBI portal as well. Also एक और portal है which is सचेत portal of RBI. अगर आपको कोई complaint है, you can file on that as well. And prove कैसे करेंगे? It's very simple. I mean एक example दूंगा आपको card cloning का कि let's say आपने दिल्ली से पैसे withdraw किए ATM से, suddenly एक आपको message आ रहा है कि your money has been debited और तमिलनाडु से message आ रहा है. Now प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आपको मनी विड्रॉ करने के लिए कार्ड तो चाहिए. अब कार्ड आपके पास है, यू आर राइट नाउ इन दिल्ली, इमीडिएटली 5 मिनट के बाद तमिलनाडु से मैसेज आ रहा है आपको कि उधर के एटीएम से विड्रॉ हो गया, राइट? सो आई मीन दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल वेर इन यू कैन प्रूव कि आई वॉज नॉट देयर फिजिकली, मेरा कार्ड भी मेरे पास था, मैं भी इधर था, फिर भी मेरा पैसा उधर से कट गया. सो ओके. एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड ये बहुत लोग पूछते हैं, अभी भी हमारे पास इसका बहुत सारा क्वेरी आया दैट हाउ टू गेट टू नो दैट दिस एप्लीकेशन व्हेन वी आर डाउनलोडिंग इज सेफ और नॉट. सो ऐप्स के ऊपर सर विल यू टेक द आंसर? If you just go to an application or you just write something in the internet, you can just see that initially what are coming as a recommendation, that will be fake, and the genuine will be, you can just make sure that the number of downloading, if it is with a big number or maximum number, then you can go for that. That is the one method. And some other and I will add to couple of indicators. So आप अपने फोन में चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक ऑन योर फोन और ऑन योर गूगल प्ले स्टोर. सो देयर विल बी एक बहुत अच्छा मेजर है दैट वी हैव सीन हियर कि अगर आप 1 स्टार रिव्यू देखेंगे फॉर एनी ऐप, ओके, सो ऑन 1 स्टार रिव्यू व्हाट विल हैपन इज कि द reviews from the people, those who have given 1 star review will contradict with the 5 star reviews. मतलब 5 star review अगर आपने चेक किया तो उसमें आएगा कि बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसने मुझे अच्छे से लोन दे दिया, उसने बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत सारे रिव्यूज हैं. 1 star रिव्यू आप चेक करेंगे तो उसमें आएगा कि ये ऐप तो फर्जी है, इन्होंने मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया, बहुत हमारा हेरेसमेंट हो रहा है. सो यू हैव टू लुक एट इट बिकॉज इट्स अ मल्टी इंडिकेशन फिनोमिनन. सो जैसे आप ब्लाइंडली बेस्ड ऑन द रिव्यूज नहीं जा सकते हैं कि 5 स्टार रेटिंग है तो 100% जेन्युइन होगा, नहीं, दैट कुड बी फेक्ड एज वेल. सो दैट इज व्हाई आप ये कुछ चीजें चेक करिए. रेटिंग के बेसिस पे आप ब्लाइंडली नहीं जा सकते हैं, रिव्यूज के बेसिस पे ब्लाइंडली नहीं जा सकते हैं. यू हैव टू लुक आफ्टर द ऐप, ऑल्सो लुक एट द पब्लिक फोरम्स के कहीं पे कंप्लेंट तो नहीं है ये ऐप्स के सामने. सो देन दैट इज द बेस्ट वे टू जज वेदर द ऐप इज सेफ और नॉट. Okay, so I think that's enough criteria for the viewers to understand. So we'll take last question because of the constraint of time. Sure. Otherwise, we have received a lot of queries, so maybe we can answer them sometime later. Fine. For now, the last question would be, Sir Robin, sir, would you like to answer this? You showed that how to make a complaint when the mobile gets stolen, right? So would you like to show that process once again? How to make a complaint if the mobile gets stolen? In Sira, Sanchar Bharat. Sanchar, yes. That website you can Just we'll briefly. Yeah. So there is a website, we had already showed that website. They have a tutorial video as well. So because of the paucity of the time, we'll not explain the process. But आपको basically एक login करना है पोर्टल के अंदर, login करेंगे and then you can fill in the detail जो भी मैंडेटरी है. आपका जो लॉस्ट फोन है, you will basically you will need some details जैसे IMEI नंबर वगैरह आप भर दीजिए and then it will be lodged. So yes. One more question related to this only. Sunita is asking that so once a person files the complaint, is there any timeline in which that person can expect that the amount would be recovered or the investigation would be done? Recovery के लिए you will Any timeline? No timeline. Once if your money has been freezed in account,
I think that is the question you are asking. Once Yes, your money is lost, Right. and money is in account and that has been got freezed. So you can just move to the police station, and the FIR should be done in the police station. And with the FIR, you have to get a court order. A small court order can defreeze your account, and you can get back your money. Okay, all right. Thank you so much for both of you for clarifying so many doubts of the viewers, and there are so many left, but I'm sure if they'll watch the entire program once again, they'll get more clarification. Thank you so much for being a part of this program. It was Sure, thank you wonderful very much. having you. Thank you. Thank you very much. Thank you to all the viewers for raising these doubts, these questions. This shows that you actually are aware and you want to be more aware. So this is the actual motive of this entire online training, and tomorrow we'll talk about the ethical aspects of cyber safety and security. Be here and watch the 5th and the last day, the last hour, and we'll be discussing more things, and the quiz link will also be given to you. A lot of queries we received regarding the quiz link. Let me tell you that tomorrow at 6 o'clock the quiz link will be revealed on the website itself, so you can check it from there. And also so many people were asking about the attendance link. There is no attendance link. You do not have to prove that you are here. Don't say good evening, rather raise your questions. This is the best time when you can get the clarifications, and for any queries you can always raise your question. We have a dedicated email ID for that. Let me show you, if you have not registered or participated yet, this is the website you have to open. Type CIET in your browser, and this is the front page you will see. So here is the front page. You can see there are so many options. Just click on the option events. The third last option is workshop/training. If you click on it and scroll a little down, in the current activity you can see online training on safety and security in digital space. Please click on it. Once you click on it, this entire page is dedicated for this online training. What is the purpose? The entire schedule from day 1 to day 5. The topics have been mentioned, the objectives, who all can participate, and these are the details, and this is the link through which you can click and fill the form and register yourself, or scan this QR code, this particular QR code, and be a participant. If you have not seen the earlier sessions, the day 1, 2 and 3, you can simply click here and watch all those sessions. Here is the space where the quiz link will be updated on 9th of June, which is tomorrow 6 p.m. and you will get enough time to be a part of this quiz, and if you score 70% and above marks, you will get a participation certificate. Here is the feedback link. Click on it and submit the feedback, and this is the dedicated email ID for our questions. So here is the entire page for our online training information. We are wrapping up this particular program, but come back again on eVidya channels, and we have another special program of ours that is called Sayog. The title of discussion would be Bouncing Back, Techniques of Maintaining Well-Being. Keep on watching eVidya channels. I'm Tanvi Khurana. I'll take a leave of you, and I hope you have a great day ahead. I'll see you tomorrow sharp at 4 p.m. on this platform itself, that is NCRT Official. Thank you so much once again. Namaskar.